Chapter 5, Concept of Zero. So in this chapter we will learn what is the value of zero, what is the meaning of the zero, how the zero has been discovered. Do you know who has discovered the zero? Zero is represented like this. Zero means nothing. Zero means nothing. सर इसमें इसमें क्या करना है? बता रहे हैं ना, वही तो पढ़ा रहे हैं, सुनो. जीरो मीन्स नथिंग. क्या करना है? चैप्टर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. तो किसने जीरो डिस्कवर किया है? डू यू नो? आर्यभट्ट. Aryabhatta is the name of mathematician of our country. आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन थे हमारी कंट्री के. तो बाय हिज नेम ही हैज डिस्कवर्ड द जीरो. किसने जीरो डिस्कवर किया? आर्यभट्ट ने. किसने किया? आर्यभट्ट. हमारा नेट नहीं सही है बेटा, इसलिए आवाज नहीं आ रही. हाँ, तो जीरो हैज नो वैल्यू. जीरो हैज नो वैल्यू. इट मीन्स नथिंग. नो वैल्यू मीन्स नथिंग. Yes. No value means nothing. Subtracting itself. So when you subtract two numbers itself, we will get 0. 2 minus 2. 2 vertical line ये and 2 vertical line ये सब कट गई. How much left? Nothing. That is 0. So let's understand the concept of zero with the help of example. So what is the example given? There were 3 frogs. There were 3 frogs in a pond. This is a pond. 1 frog, 2 frog, and 3 frogs. If all the frogs came out of the pond, if one by one each frog will jump out from the pond, when each frog go outside of the pond, what is the inside of the pond? None of the frog. Means there is nothing inside. It means left is 0. So what is left in the pond? That is left frogs are 0. So 0 number of frogs are left in the pond now. Or you can say no frog. What can you say? No frog. Here no frog means 0 frogs. Okay. Next thing. Some more examples are given. When we subtract same number subtracted by its own, we get 0. 3 minus 3, 0. 4 minus 4 is equal to 0. 5 minus 5 is equal to 0.
So we can say when we subtract a number from itself gives 0. So fill this one. Fill this table. 5 minus 5, 0. Write down this. 2 minus 2, 0. 1 minus 1, 0. 7 minus 7, 0. 4 minus 4, 0. 8 minus 8, 0. 9 minus 9, 0. 3 minus 3, 0. 6 minus 6, 0. Written? Hello? Akshita? और ये कौन है साथ में? लक्ष्मी मैडम बच्चा है कि आप हैं? यस सर, ये बच्चा है, फिर ये भाग रहा है, इसको जब से क्यों भाग रहा है ये? परशु कम हियर। क्यों भाग रहा है? वीडियो ऑन करिए इसके। व्हाट हैपेंड बेटा? क्यों भाग रहे हो भैया? यस सर। देखो अक्षिता पढ़ रही है अच्छे से। अक्षिता से बेटा से हेलो टू द। अक्षिता भी जुड़ी हुई है। हाँ अक्षिता अच्छा डेली पढ़ती, फर्स्ट क्लास। से हेलो बहुत अक्षिता। कौन है सर? कौन है ये? देखो क्या नाम है इसका? नहीं सर, पढ़ाएंगे तो एज फ्रॉम योर क्लास। अक्षिता बोलो उसको हेलो, बुलाओ। अक्षिता एकदम इंटरेस्टेड रहती है। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है? बोलो मम्मी को, उसको मैडम दिखाइए उसको। एडिंग 0, व्हेन Yes, वी sir. ऐड Adding 0, तो द फॉलोइंग एग्जांपल्स help us to understand the above concept. There were 5 oranges. How many oranges are there? 5 oranges. 5 oranges placed on the basket. 1, yes sir. 2, 3, 4 and 5 oranges. And one basket is without orange, means 0 orange. So when you will add it, you will get 1, 2, 3, 4, 5. Means when we add 0 in any number, we get a same number. What do we get? Same number when we add 0 in it. So 5 plus 0 is equal to 5. 1 plus 0 is equal to 1. 3 plus 0 is equal to 3. 0 plus 4 is equal to 4. Either you add from this side or you add from that side, you will get same number. You will get 4. Okay. So you can say when we add 0 to a number, it gives the same number. Or when a number is added to 0, then also it gives same number. ये आपको याद कर लेना, होमवर्क। नोट डाउन। कौन सा सर? यहाँ से यहाँ तक। When 0 is added to a number, it gives the same number. यहाँ तक याद करना, ठीक है? टिक कर लो। पेंसिल लीजिए, टिक इट।
Notebook having? Writ- Do you yes have sir, notebook? written हो गया. हाँ, written हो गया नहीं, I have written. क्या बोलोगे? I I have, have written. हाँ, I have written. written. तो 7 plus 0 Written. is equal to 7. 9 plus 0 is equal to 9. And 6 plus 0 is equal to 6. चलिए. Okay, children. Time is over. Yes sir. Thank you. Bye. Good night. Yes. Good night.